Very good evening. Thanks for joining us here on Mirror Now. I am Afrida Rahman Ali. First up, inputs coming in on the oath-taking ceremony of the new ministers in Yogi Adityanath's cabinet in Uttar Pradesh. We are still waiting for the official confirmation of the new names that will be inducted today, but we are given to understand 7 new faces expected this time. The expansion comes months before the UP state elections. Among those administered oath of office, are former Congress leader Jitin Prasada, was a close associate of Rahul Gandhi and had joined the BJP only in June this year. In fact, he is the top Brahmin face of the party now in Uttar Pradesh. So a crucial expansion of the Uttar Pradesh cabinet happening right now in Lucknow. Okay, you can see there Jitin Prasada being sworn in as a member of the cabinet in Yogi Adityanath's cabinet. In fact, what we are tracking right now is the interesting power equation, or rather balance of the caste equation that is being worked out. This is going to play a crucial role in the upcoming state polls. The focus will be on the backward classes, on the scheduled caste, as well as on the Brahmins. BJP allies also likely to get a place in the state cabinet, which we are going to confirm very shortly once the ceremony is over. BJP's own OBC and scheduled caste leaders could also be inducted. It was much expected that Jitin Prasada will be included with an aim to woo the Brahmin votes. Netas with clean image to push the Vikas pitch likely to be included. So we are in fact now looking at the oath-taking ceremony taking place in Raj Bhavan in Lucknow, where the governor is administering the oath of office to the newly inducted ministers. Okay, my colleague Adarsh joining me with more inputs on this. So Adarsh, as of now, which are the confirmations we have on the names of ministers who have taken oath so far? देखिए, पहला नाम जितिन प्रसाद का है और वही कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं। बाकी जो 6 नाम हैं, पलटू राम और छत्रपाल गंगवार, संगीता बलवंत भिंड, धर्मवीर प्रजापति, संजीव कुमार गौड़ और दिनेश खटिक, इन सभी 6 जो मंत्री बनाए जा रहे हैं, इन्हें एमओएस बनाया जा रहा है, यानी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाए जाएंगे ये। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अभी इसके साथ ही साथ जो सरकार का मंत्रियों का कोटा है, 60 मंत्री जो सरकार में, यूपी सरकार में होते हैं, कोटा पूरा हो चुका है। पहला नाम जितिन प्रसाद का बुलाया गया है और उसके बाद पलटू राम बुलाए जाएंगे और उसी कड़ी में जिस तरीके से जिस क्रम में उन्हें आमंत्रण दिया गया है, उसी क्रम में दूसरे नाम भी बुलाए जाएंगे। ओके जी, जो नाम आपने लिए, जितिन प्रसादा, छत्रपाल सिंह, पालटू राम, संगीता बलवंत, संजीव कुमार, दिनेश खटिक and Dharamveer Singh to take oath as ministers in the Uttar Pradesh government this evening. आदर्श, ये जो नाम है, ये इनका एक महत्व भी है क्योंकि ये एक कास्ट रिप्रेजेंटेशन से आते हैं और उसका महत्व बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है वहाँ पे यूपी में। किस तरह का वेटेज दिया गया है अलग अलग जो कास्ट और कम्युनिटीज़ है यूपी में उनको? देखिए, पहला नाम अगर जितिन प्रसाद की हम बात करें तो ब्राह्मण चेहरा है, वेस्टर्न यूपी का एक बड़ा नाम है। इसका फायदा ईस्टर्न यूपी और अवध क्षेत्र जो है वहां भी मिलेगा। पलटू राम जो है वो एससी कम्युनिटी से आते हैं, बलरामपुर से मौजूदा विधायक हैं, इनको भी फायदा, इनके नाम से भी फायदा मिलेगा उस पूरे इलाके में। छत्रपाल गंगवार जो हैं, कुर्मी जो जाति होती है वहां से आते हैं, बरेली इलाका है इनका, यहाँ से भी काफी हद तक बीजेपी को इस नाम से मदद मिलेगी। इससे पहले की हालांकि कुर्मी जाति सहयोगी दल जो अपना दल रहा है वो जरूर बीजेपी के समर्थन में रहा है। संगीता बलवंत भिंड हैं, वो भी गाजीपुर से आती हैं। धर्मवीर प्रजापति एमओएस हैं, वो भी आगरा से आते हैं। संजीव कुमार गौड़ हैं, एसटी हैं, सोनभद्र से आते हैं। और दिनेश खटिक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एसटी हैं, मेरठ से आते हैं। और इसमें रोचक बात यह है कि दिनेश खटिक जिस सीट से आते हैं, हस्तिनापुर सीट का नाम है और माना जाता रहा है कि जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद से अब तक जब भी हस्तिनापुर सीट पर जिस पार्टी का विधायक जीता है उसी पार्टी की यूपी में सरकार बनी है, ये अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। तो ऐसे में
उन सीटों पर भी और साथ ही साथ जाति समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है और इलाके भी अलग अलग चुने हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर ईस्टर्न यूपी भी शामिल किया गया है, अवध का जो क्षेत्र है वो शामिल किया गया है, वेस्टर्न यूपी से कई नाम है और कई जिले तो ऐसे भी हैं जिसमें कोई भी मंत्री इससे पहले 4.5 साल की सरकार में नहीं था, उनको भी शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा फैसला है, बड़ा संदेश देने की कोशिश है और निश्चित तौर पर चूंकि चुनाव होने वाले हैं आने वाले 4 से 5 महीनों में, तो उसको लेकर भी वोट बैंक कैसे बेहतर बैठ सकता है, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण कैसे बेहतर बैठ सकता है, उसको भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल काफ़ी सारे फैक्टर्स है जैसा कि आपने कहा इनफैक्ट प्रेजेंटली द यूपी कैबिनेट हैज़ 53 मिनिस्टर्स एंड 7 मोर will be inducted today and that would in fact meet the constitutional limit out of which 23 cabinet ministers including the chief minister तो काफ़ी बड़ा कैबिनेट रहेगा ये आदर्श उस हिसाब से और जैसा कि आपने कहा कि रीजन्स को भी बैलेंस करने की कोशिश और कास्ट को भी it's quite a tightrope walk in that sense for योगी आदित्यनाथ और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इलेक्शन रहेगा ये ना सिर्फ यूपी में बल्कि even in terms of the center for the central leadership ahead of the लोकसभा इलेक्शन यूपी की महत्व बहुत ज़्यादा है इस बार। बिल्कुल देखिए अगर सीटों के लिहाज से बात करें तो देश की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। 403 विधानसभा सीटें यहाँ पर मौजूदा समय में हैं और ऐसे में अगर आप देखें तो सभी जातियों, सभी धर्मों से, सभी वर्गों से या सभी इलाकों से मंत्री बनाना संभव नहीं है और इसीलिए जिन लोगों का नाम इस मंत्रिमंडल में छूट गया है, जो लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं, उन लोगों को यहाँ पर जो एमएलसी होता है, एमएलसी कोटे से उनको विधान परिषद में भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर कोशिश ये है कि किसी भी वर्ग को नाराज न किया जाए और इसीलिए अगर आप देखें तो चुनाव से पहले तैयारी इस तरीके की जा रही है कि कोई भी वर्ग हो तो कम से कम ये ना कह सके, ये आरोप ना लगा सके कि उसके वर्ग या जाति या इलाके के व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया गया है, किसी खास पद पर सरकार में नहीं रखा गया है जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको नुकसान ना हो। Bilkul, absolutely. And in fact, that is the reason why we see that there is a very careful balancing act being done with representations given to regions and caste groups in UP. And the names, of course, they're flashing on your screens as we see the new ministers taking oath of office. Chhatrapal Gangwar taking oath of office, the governor administering the oath of office to the new ministers in Raj Bhavan in Lucknow. Adarsh, thanks for joining us. Okay, what we are trying to do, of course, is to understand the selection, the inclusions that have been made this time around. A big talking point around, of course, Jitin Prasada, who's only recently moved from the Congress party to the BJP. The new ministers will have a very short span, in fact, since the elections are already due. This could be the shortest ever expansion undertaken by any government in the state within few months of the state going to polls, and this is going to be extremely critical, like we have been discussing, for Yogi Adityanath, a big test for the UP Chief Minister. Will this expansion cover up the leadership failures? Will it woo the Brahmin vote bank, which many believe have receded to a certain extent from the BJP? Will it regain those lost ground with this expansion? So those are the issues that will be discussed once we have all the names clear. As of now, you can see different ministers taking oath of office already. We've had Sangeeta Balwan taking oath of office. Paltu Ram already been sworn in as a minister in Yogi's cabinet. Jitin Prasada was the first to be called in. The oath-taking ceremony is currently on in the Raj Bhavan in Lucknow. The expansion, like I said, comes months before the assembly polls to include representations from various caste and communities. The expansion comes in a politically extremely significant state of Uttar Pradesh, so it will be relevant not just at the state level but also at the center. The caste equations are being balanced out very, very carefully. Nirja Chaudhary joining me, a senior journalist joining me on the phone line. Nirja, good evening. More or less, we see the list of probables that already was released earlier. More or less, it has been the same names that we see taking oaths today. What are your big takeaways, Nirja, from the names that are included now in Yogi Adityanath's cabinet?
Look, obviously, Jiten Prasad's name is an expected name. It was on the cards even when he was inducted in the party from the Congress. He swapped sides, and the party is aware that the image of Yogi Adityanath's government in recent months has been much more pro Thakur, a community to which he belongs. And the Brahmin community, which is about 12 to 13% in Uttar Pradesh, and had been with the BJP ever since the Ram Mandir movement, had begun to be very restive. So they have reached out to the Brahmin community and will continue to reach out to them. And Jiten Prasad fits into, it's part of that strategy. Yes, fits very well into that strategy. But overall, Nirja, do you think that the overall idea of taking away from the sort of criticism that Yogi Adityanath faced for handling of the pandemic, will this sort of policy to give representation to regions and castes help take away the flack that the CM faced, or any anti-incumbency for that matter that Yogi Adityanath could have faced? That remains to be seen, because if you remember, during the second wave of COVID, there was huge anger. We saw those bodies washed down the river Ganga, and a lot of people lost their lives. There was restlessness, and the party is now pulling out all stops to, correct that image. Also, that if you see huge full-page ads in the papers, in television, hoardings, to put out the message of what Yogi Adityanath has done in different, for women, for development. So I think they're going out of the way to correct that image. Now, will this lead to a toning down of the anger? Remains to be seen. And also, the cabinet is part of the overall exercise, because elections are around the corner, and reaching out to communities that have been unhappy, restless, and that will also include the smaller OBCs, the Nishads, the Rajbhars, those kind of communities, particularly in eastern Uttar Pradesh, where the party had done very well. Now it will be interesting to see what the BJP will do and Yogi Adityanath's government will do to win back the Jats of Western UP. The Jats have been angry, and that is also reflected in the farmers' movement. And Jats underpinned the BJP's victory last time. But if the Jats combine with the Muslims in Uttar Pradesh, Western Uttar Pradesh, that can be very problematic for the BJP. So it remains to be seen what the party will do to win that community back. Yes, an all-out effort, Nirja, like you rightly pointed out, to woo the vote banks, to consolidate certain vote banks, to regain some lost grounds. A very carefully thought out strategy, of course, that we see there. But then months before elections, which means that this expansion is more political than anything else. The idea is to send out a message to the right communities about giving them enough representation. Thanks for joining us, Nirja, with your inputs on the story.